company's valuation is high, based on the valuation of the company, these people also evaluate the valuation whether it is as per the expectations of the founder, and based on the multiple discussions, they understand the entire nitty-gritty of the company, and that's when they say yes, the valuation can be at this stage, and they fund at that level based on the expectations of the founder. Rajeev ji. हेलो, राजू जी आप सुन रहे हैं? हाँ राजेश जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो राजू जी। हेलो, आ रहे बोलिए। आ रही। हाँ आ रही है, आप बोलिए राजेश ना। जी, why don't you do a log out and log in? Oh, sorry. Yes, go ahead. चलिए रविशेखर जी आगे चलिए, वो शायद सुन नहीं पाए। He could not hear you. Okay. This is what about the entire thing, sir. Here, venture capital funds के बारे में किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बोल सकता हिंदी में थोड़ा ट्राई करता हूँ। ये वेंचर कैपिटल फंड्स क्या है बोले तो एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू ही आता है, मगर नॉट ओनली एंजल इन्वेस्टर्स, ए फैमिली हाउसेस, ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोले तो अपने को LIC है, थोड़े म्यूचुअल फंड्स है, प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स भी है, वो है, और अपने पेंशन फंड EPF के इसमें जमा करते हैं ना अपने सब, आप सब लोग जिधर भी काम करते हैं पेंशन फंड को फंड करते हैं वो मंथली वो फंड आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट देता है 8%। वो किधर से आ रहा है वो 8%? क्योंकि वो फंड खाली पड़ा रहता है उन लोगों के पास। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। उन लोगों का रेशियो रहता है इतना हाई रिस्क में इतने परसेंट 20% ये डालता हूँ, 50% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और 30% मीडियम रेंज रिस्क स्टॉक्स में लगाते हैं। ऐसा है ये पेंशन फंड और LIC फंड का ये रेशियो रहता है। उसी के वास्ते वो इन्वेस्ट करते, उसके वास्ते उसमें इन जो इनकम आता है वही आपको इन इंटरेस्ट के दरमियान दे सकते हैं। वो फंड्स आज वो अब तक तो स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे, वो अभी वो फंड्स स्टार्टअप्स में भी आ रहे हैं। वो किधर दे रहे, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये पेंशन फंड्स है LIC वाले डायरेक्ट नहीं कर रहे, वो वेंचर कैपिटल फंड्स को इन्वेस्टमेंट के दरमियान दे रहे हैं। वो इंटर्न स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करके उसमें इन लोगों का फंड भी पार्टिसिपेट कराते हैं। ऐसा है वेंचर कैपिटल फंड्स का। तो वाया जाता है वो? हाँ, वाया जाता है। वेंचर कैपिटल फंड वाया फंड होता है क्योंकि एंजल इन्वेस्टर वो डायरेक्ट कर रहा है। वेंचर कैपिटल फंड में क्या है, ऐसा 100 और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स, छोटा इन्वेस्टर्स एक जगह पूल होते हैं, जैसे कि अपना को बैंक्स है, LIC है, पेंशन फंड है, ऐसा अपन सब पैसे डाले तो इधर पैसा आ रहा है ना, वो पैसे लेके आके फिर वेंचर कैपिटल फंड में कैसे दे रहे। ऐसे ही ये फैमिली ऑफिसर्स, HNIs, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 2 करोड़ वो देते हैं। इन लोगों वेंचर कैपिटल के पास क्या होता है, ईयरली दे क्रिएट फंड like 500-600 crores. They open up funding for investors only, not for the startup. They open up funding for investors and they say, we are coming out with a growth fund, we are coming out with a seed fund, and for that we are creating 500 crore fund. In that, if you are interested to participate,
You need to pay some fees for them. At the same time, the return ratio IRR will be given by the venture capital to you, saying that on this investment we would give this much of IRR. They will beforehand tell you. That is the reason I said, if I take venture capital fund detail, I can go talk to you for more than 4 hours. Let's not get into it बोल के उसी के वास्ते. तो ये वो वेंचर कैपिटल में रविशेखर जी इन्वेस्ट करने के पहले वेंचर कैपिटल वाले आपको बताते हैं क्या हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग? हाँ, वो पहले फंड क्रिएट करते समय बोलते हैं सब. एवरी स्टार्टअप जब फंड आता है ना, वो टाइम पे नहीं बोलते. वो फंड क्रिएट होता है, वो उन लोगों का एवरी 3 years 2 years they create a bigger fund like 400 crores 500 crores fund. At that time only they say, for this fund, this we are going to give you an IRR in return ratio, interest return ratio of this much, 27% or 30%, 36%, whatever. In that they clearly say, this is what the IRR we will give minimum. Huddle, Okay. whatever they say, that is totally different. If you get more for that fund, whatever the fund is, right, that will be blocked for certain period, and within that certain, they say, in this 500 crores fund we are going to complete in the next 3 years span. So they evaluate the startup and try to put the funds accordingly, and they don't rush and put the fund in whatever the startup comes. So they also do the lot of evaluation, but still they fail. That's a different issue. And most of the startups fail even after funding. Yeah, but what is the eligibility of getting startup that fund? What, sir? What is the Eligibility? How they evaluate the startup that are going to? Every angel investor has his own way of evaluation. Basically, he whatever the risk he can take and whatever he knows about the product, based on that they do the evaluation. And for the venture capitalists, the evaluation strategy is they will look for a valuation certificate from a proper company secretary and a chartered accountant. On top of it, they also do the market validation, how much really they are able to give as of today to the market, and what is their strength today in the market, who are their competitors. They all evaluate all these things, and based on that only they do the funding. For example, if I take Oyo was a small company starting, but today it is valued at $16 billion. How it started growing, and as the newer VC fund comes in, the VC fund, when they are coming in, they see the value of the company and they say, yes, if I fund this much into this company, the growth can happen into multiple countries in this way, and I can get this much of return. Based on that, their strategy, their connects in the market, they evaluate and say, yes, I can value at this company at this stage, at this value, I can give you fund. And based on that valuation, they say, yes, I'm ready to fund you at $16 billion valuation. I will fund you $150 million into you. That's how it happens, sir. So what guarantee they are taking from all these startups? No guarantee. Once you invest in any startup, whether it is an early stage or a growth stage fund, your money is zero immediately. Keep this in mind very clearly. No guarantee. Simple. पानी में डाले सो जैसे आया तो आया 10 गुना 100 गुना, नहीं तो गया तो पूरा गया, इतना ही. तो ये वेंचर फंड ऐसे रिस्क कैसे लेते हैं? वेंचर फंड में सर a lot of venture capital companies are there, as I told you. Bigger houses are Sequoia Capital in India, Matrix Partners also in India, SL Partners, what other guys, Indian Angel Networks. And these Indian Angel Networks is an India-based fund. Mumbai Angel Networks is local to Mumbai, and they have investors all over India also, but they are very local to Mumbai. So they